So hello guys, good morning everyone. How are you all? मज़ा आया कि नहीं हॉर्मोन्स पढ़ के? हमने खूब सारे हॉर्मोन्स पढ़े हैं पिछले 2 दिनों में। कल किया था और आज भी करने वाले हैं और कल वापस से हम हॉर्मोन्स ही पढ़ेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स हैं गायनिक में. सो गायनी एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट surgery, it is not just medicine, it has lot of endocrinology, too much hormonal study that we have to do, very very important. राइट सो अभी मैं लाइव चैट देख रही थी. सो आज हम सिर्फ और सिर्फ हाय अर्जुन. सो आज हम सिर्फ MCQs करने वाले हैं, नो थ्योरी, बिकॉज हमने कल भी थ्योरी पढ़ ली 2 क्लासेस में. आज वापस से इवनिंग में स्पेशल क्लास है 7:30 बजे, जिसमें कि मैं हॉर्मोन्स, GnRH, गोनाडोट्रोफिन्स के बारे में बताने वाली हूँ. कल हमने पढ़ा था प्यूबर्टी में क्या क्या सिंड्रोम्स है, एबनॉर्मल प्यूबर्टी में एंड नॉर्मल प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ में. कल हम इवनिंग में वापस से 2 क्लास लेंगे जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन हार्मोन्स जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो कुछ और लोग आ जाए, उसके बाद हम MCQ सेशन शुरू करते हैं. सो लेट मी जस्ट टेल यू कि मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार. मैं आपकी ऑब्स एंड गायनी ट्यूटर हूँ अनअकैडमी पे. आई हैव जस्ट ज्वाइंड अनअकैडमी दिस मंथ. और वैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ. मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें मैं पेशेंट्स को गायनिक और ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में बताती हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ. और एक और चैनल है डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स, जो कि आप बच्चों के लिए बनाए हैं मैंने, जिसमें कि मैं काफ़ी लेक्चर्स कवर कर चुकी हूँ और अभी उनको वापस से हम अनअकैडमी पे शुरू करेंगे. ठीक है, बाकी अगर मेरे बारे में आप जानना चाहें तो मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से. मेरा खुद का हॉस्पिटल है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ पिछले 22-23 साल से. कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोस्कोपिक सर्जन, कॉल्पोस्कोपिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ. यूके से मैंने MRCOG करा है और 2007 में मैं वापस आ गई थी. ओके, so that's about me. Hi everyone, I can see some people joining in. सो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है और भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीक का जो कैलेंडर आपके पास आ गया है 21 मार्च से 27 मार्च तक. गाइज अनअकैडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग ऐप, क्योंकि आपको लगातार टेस्ट सीरीज देती है और हर सब्जेक्ट में इतने सारे ट्यूटर्स हैं आपको हेल्प करने के लिए. तो बेसिकली ये ट्यूटर्स आपके साथ मेहनत करते हैं, अनअकैडमी की टीम आपके साथ मेहनत करती है और आपको पता चलता रहता है कि क्या क्या टेस्ट आ रहे हैं. उसके लिए आपको ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा. इनके हेल्पलाइन नंबर 8585858585. ठीक है, इसको अगर आप करेंगे टाइप, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, रुको, दैट विल बी इजी, है ना. 8585858585, दैट्स द हेल्पलाइन नंबर. इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या लेटेस्ट ऑफर्स चल रहे हैं. ठीक है, सो दैट्स द हेल्पलाइन नंबर. हाय, गुड मॉर्निंग डॉक्टर गिरी चैतन्य. सो दैट्स अ कैलेंडर, यू कैन जस्ट सी क्या क्या हो रहा है. ऑर्थोपेडिक टेस्ट सीरीज है 21 मार्च जो कि हो चुका है. कल एक ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. सुबह 9 बजे संडे मॉर्निंग शुड स्टार्ट विद MCQ सेशन, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बिल्कुल पास में आ रहा है. सो दैट पूरे दिन आपको पता रहेगा आप कहाँ लैग कर रहे हैं एंड देन यू कैन प्रैक्टिस दैट वे. ठीक है, फिर ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के बारे में जो मैं कल बता रही हूँ, इसमें आपको बिल्कुल डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए. और मेरा कोड है, आपको पता है मेरा कोड क्या है, मेरा कोड है डॉक्टर सोनल. अगर आप इसको यूज़ करेंगे देन यू विल नो कि भाई आपको कैसे क्या करना है, कितने क्या पेमेंट रहता है. और इसमें लेट मी जस्ट राइट इट हियर, इफ एट ऑल आई कैन राइट इट. सो दैट्स DR, okay, so DRSONAL. So that's my code in capitals, Dr. Sonal without any cap. ठीक है. नाउ लॉन्चिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये 23 मार्च को हो चुका है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स लॉन्च हो चुके हैं. सो गाइज 2 महीने का जो मैराथन बैच शुरू हुआ है फॉर PG स्टूडेंट्स, जो नीट PG के एस्पिरेंट्स हैं, FMGE के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए 23 मार्च से 23 मई का एक बैच है, जो कि 2 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. उसमें आप मेरा कोड यूज़ करिए डॉक्टर सोनल, और उसको यूज़ करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस कि आपको बहुत फ़र्क पड़ा. क्योंकि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अनअकैडमी की टीम भी आपके साथ बैठी हुई है. ठीक है, सो गाइज उसको जरूर अवेल करो. डॉक्टर सोनल, मैं वापस से लिख रही हूँ, डॉक्टर सोनल, दैट इज माई कोड. ठीक है. नाउ MBBS Prop 1, ये सारे इनके अलग अलग लॉन्चेस हैं. अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझेंगे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा. गुड मॉर्निंग ओमकार.
नाउ डाउट क्लेरिफिकेशन सीरीज ये सब भी चालू हो चुका है और ये 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स है। 1 अप्रैल से मेरी भी क्लासेस शुरू हो रही हैं जिसमें मैं 4-4 घंटे आपको पढ़ाने वाली हूँ। द बेसिक मेन टॉपिक्स ऑफ हाई यील्ड टॉपिक्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम स्पेशल क्लास में करेंगे और मॉर्निंग में इवनिंग में प्लस क्लासेस भी रहेंगी। इसमें प्लस क्लासेस रहेंगी वो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। प्लस क्लासेस आर पेड और जो स्पेशल क्लासेस होती है दे आर नॉट पेड। ठीक है, दे आर फ्री। सो डॉक्टर सोनल मैं हर स्लाइड पे लिख रही हूँ, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सोनल इज माई कोड DRSONAL विदाउट एनी गैप। यू कैन जस्ट टाइप दिस कोड एंड यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। और किसी भी फ्री क्लास को देखने के लिए आप इस कोड के थ्रू अंदर घुस सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्लस सब्सक्रिप्शंस, इसमें आपको पता है अनअकैडमी की जितने भी ट्यूटर्स हैं उनको आप किसी भी डिवाइस पे पढ़ सकते हैं। आप सारी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप compete कर सकते हैं लाइव क्विजेस में, टेस्ट्स में, और आप इनके सारे क्वेश्चन बैंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसका आपको वापस से कोड यूज करना है डॉक्टर सोनल। आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक इज प्री पैडलर प्लस अनअकैडमी, तो आपको प्री पैडलर को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज प्री पैडलर, और इसको लेने के लिए आपको ऑब्वियसली 2 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 महीने के अंदर जो एग्जाम आ रहा है उसमें आप आइकॉनिक नहीं ले पाओगे, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप अनअकैडमी और आइकॉनिक दोनों को पढ़ पाओ। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा, इसमें भी सारे इंटीग्रेटेड एसेंशियल्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, सारी रैपिड रिवीजन एंड स्नैपशॉट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चन बैंक्स है, तो सब कुछ अवेलेबल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टॉपर्स FMG बैच के 2021 दिसंबर के, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। देन स्पेशल क्लास के फीचर्स जो मैं इवनिंग में ले रही हूँ, डेली हमारी दो इवनिंग क्लासेस हो रही हैं, जिसमें कि आपको इंटरैक्टिव क्लासेस है। आपको बेल बटन दबाना है जिससे आपका क्लास मिस ना हो जाए। आपको लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने तो आप कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो यू कैन टॉक टू मी इन ऑडियो। देन पॉलिंग सेशंस रहते हैं, जब भी हम MCQ करते हैं तो हम पॉलिंग सेशंस भी करते हैं। ठीक है, तो उसमें यू कैन ऑलवेज वोट, यू कैन चूज द क्वेश्चन। जैसे कि अभी हम यूट्यूब पे करने वाले, यूट्यूब पे पॉलिंग सेशन नहीं हो सकता, यूट्यूब पे आपको जस्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। सो इट विल बी बेटर कि आप क्वेश्चन का हाथों हाथ ABCD करके जो भी आंसर है वो लिखते हैं। ठीक है, एंड दीज क्लासेस इन द इवनिंग आर वेरी इंटरैक्टिव। यू कैन इजीली टॉक टू मी एंड यू कैन इजीली चैट विद मी। ठीक है, सो that is it about the special classes. These are very interactive. Now NEET PG, जैसे मैंने बताया NEET PG 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं 21 मई को जो एग्जाम है उसके लिए एक मैराथन बैच बन चुका है, जिसमें कि 23 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। इसमें सारे आपके फेवरेट ट्यूटर्स हैं, एक सब्जेक्ट में 2 3 ट्यूटर्स हैं जो आपको क्वेश्चन बैंक्स देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, PDF नोट्स होंगे, सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, सिमिलरली FMGE बैच के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है, आपके सारे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं इंटरैक्टिव क्लासेस के लिए, PDF नोट्स के लिए एंड क्वेश्चन बैंक्स के लिए। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी गुड बैच दैट हैज बीन मेड। आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरा कोड यूज करें डॉक्टर सोनल, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दीज आर द लेटेस्ट रेट्स दैट आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट जो मैं बता रही थी 2 मंथ्स वाला, दैट इज 7650। इसमें भी आपको मेरा कोड यूज करना है डॉक्टर सोनल, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट इज इट। और बाकी आपको मैंने बताया कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें 85 तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बच्चों हरी आप, जल्दी तैयारी करो, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। और अभी ट्यूटर्स जो मेहनत कर रहे हैं, कोई भी ट्यूटर की कोई भी MCQ सेशन मत छोड़ो, और जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं या फिर लाइव क्लासेस हैं थ्योरी की, उसको फटाफट सुनना शुरू करो। ठीक है, उसको एक बार चालू करो, जब आपको लगे कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो आपको नहीं आता था तो उसको वापस रिवाइंड करके सुन लो। दैट इज द बेस्ट वे। काम करते करते कुछ और करते करते आप क्लास को चालू रखो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द MCQ सेशंस, Dr. Giri Chaitanya, it is in the name of Dr. Sonal Parihar and it is NEET PG. Okay, so it's NEET PG oblique FMGE बैच। सो आपको मिल जाएगा, यू कैन जस्ट सर्च फ्रॉम माई नेम डॉक्टर सोनल परिहार। पहले आप टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर लीजिए, देन आई कैन ऑलवेज टेल यू, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, डॉक्टर सोनल परिहार। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन गाइज, फीमेल pseudo-hermaphroditism has what? Now it is a PGI question, so it will have more than one answer. So let me have the answers here. You can write ACD, ABD, whatever the answer is. Okay, then I'll tell you the answer. Female pseudo-hermaphroditism. Pseudo means it's a female. Female yani ki chromosomally. Okay, I'm not giving you the hint. I'm not giving you the hint here. गो टू माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स, उसमें मैं आज आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, कि मेरे से कैसे अप्रोच करना है, टेलीग्राम का क्या रहेगा, आई विल टेल यू ऑन दैट। डॉक्टर सोनल्स ट्यूटोरियल्स इज माई यूट्यूब चैनल।
Okay, let me have the answers, guys. A and B, Swaraj. Okay, so A is right. B is, let me have more answers. A is right. Okay, so absent ovary, no, that is wrong. It is clitoromegaly. Pseudo-hermaphrodite, and it's a female. Female means chromosomally she is a female. Okay, so that is why they're saying it's a female. And pseudo-hermaphroditism means outside she looks like a male. So that is basically androgen syndrome, that her external genitalia has been converted into a male, but she's basically a female. So she has ovary, she has uterus also, but she does not have testes. Okay. The treatment of a case of virilizing adrenal hyperplasia, क्या treatment है? Tell me. Next question. Virilizing adrenal hyperplasia, treatment क्या रहेगा? कल स्पेशल क्लास में भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन उठाया था. Come on, guys, answer the questions so that we can go आगे. Swaraj, ACTH. No, beta, it is not ACTH. It is cortisone. Basically, ACTH आप देंगे तो adrenal और ज़्यादा stimulate हो जाएगा. Adrenal gland को अपने को दबाना है. We have to suppress it. So you have to give cortisol so that it suppresses the androgen production and it suppresses the adrenal gland. Okay, ACTH is a diagnostic test. It's a challenge that you give to the adrenal gland. ACTH देने से suddenly बहुत सारा 17 hydroxyprogesterone बन जाएगा. That basically diagnosis, it is a diagnostic test for CAH, adrenal hyperplasia. Okay, so the treatment is cortisone. Next, so it's only Swaraj who is answering, nobody else is answering. Best prenatal treatment of CAH is what? Okay, any answers? Any answers, guys? Prenatal treatment for CAH. So prenatal means the fetus inside the mother is getting affected with the adrenal hyperplasia. So what do? How do you treat? You have already diagnosed. ये हम कल पढ़ चुके हैं इवनिंग में कि अगर किसी लेडी को ऑलरेडी एड्रिनल हाइपरप्लेजिया एंड शी इज प्रेग्नेंट एंड यू नो somehow that there is a female inside and she will definitely get affected because of this excessive androgen in the mother. So how do you treat that female child inside, female fetus inside? What do you give? मैंने कल आपको बताया था what is the treatment when the lady is pregnant with a female. Okay. Dreamer, it is not hydrocortisone, it is dexamethasone. Why dexamethasone? Because dexamethasone जो है placental barrier को cross कर जाएगा and it will not be metabolized by the placenta. So hydrocortisone cross नहीं करता है. ठीक है? So where is the cursor? Let me just put the. Okay, so it's dexamethasone for a patient who for a mother who has a affected female child inside. Hydrocortisone सिर्फ mother को treat करेगा, अंदर बच्चे में नहीं जाएगा because placenta को cross नहीं कर पाएगा. So it is dexamethasone. ठीक है? They are asking treatment. Okay, prenatal means before delivery. Now, a newborn with 46XX has external genitalia of a male. Okay, almost a similar question. All of the following are possible causes except क्या नहीं होगा इसमें? Okay, tell me the answer, guys. 46XX है, external genitalia of the male. All of the following are possible except in सब conditions में virilization होता है except which one?
Okay, guys, you're taking a lot of time to answer. Can you tell me? Let me answer this for you. It is AMH deficiency में virilization नहीं होगा. AMH deficiency happens in males. ठीक है, they are males and इनमें AMH deficiency होती है तो मुलेरियन भी बन जाती है, but they are not 46XX. ठीक है, तो XX है तो already AMH deficiency तो वैसे भी रहेगी. They will not have AMH because it comes from the testes. बाकी सब cases में virilization हो सकता है. There is a possibility. ठीक है. Next question. 15-year-old female presents with primary amenorrhea. Her breasts are tanner 4. She has no axillary or pubic hair. The most likely diagnosis is what? What is the most likely diagnosis? 15-year-old, good breast development, no axillary, no pubic hair. Most likely diagnosis is what? Come on, be quick. You have to be quick in this. Come on. If you don't answer this quickly, then we'll have to move on. क्योंकि बहुत सारे questions लिए हैं मैंने आज आपके लिए. Come on, guys. No axillary hair, no pubic hair, यानी कि एंड्रोजन की कमी है, but breast develop हो चुके हैं, and she is primary amenorrheic. क्या हो सकता है? स्वराज, ड्रीमर, डॉक्टर गिरी, चैतन्या, ओमकार. Come on. Answer this. Do you know the answer? Okay, it is TFS, that is testicular feminization syndrome. So she is basically a he inside. There is probably an androgen insensitivity, that is why axillary pubic hair is not developing. Okay, and we have discussed this in detail yesterday. There are 3 kinds of testicular feminization. One is complete, one is incomplete, and then there is another syndrome, Raffender's syndrome. Now, androgen insensitivity syndrome is true. Okay, androgen insensitivity syndrome is true. Phenotype may be completely female. So what is true for androgen insensitivity syndrome? That is what they are asking. The phenotype may be completely female, predominantly ovarian component in the gonads, always in female, or the testes formed abnormally and receptors are normal. What happens? Just one answer. Okay, any answers, guys? Androgen insensitivity syndrome के बारे में क्या चीज सही है? Tell me. Okay, Mithun Balaji, it is D. No, it is not D. That's a wrong answer. Testes are not formed abnormally. Testes are normal. The receptors are abnormal because the testosterone is normal. Secretion of androgen is normal, but the receptors are not accepting androgen. So androgen is not able to act. Okay? There's nothing wrong with the testes. No. Swaraj, no, it is not B. Predominantly ovarian component in the gonads, no, it is a testes. Now it depends complete है कि incomplete है. Incomplete में testes का जो action है वो अच्छा रहता है because the androgens are not that insensitive and some androgenic characters develop. Complete androgen insensitivity में androgen का कोई भी role नहीं होता because all the receptors are insensitive. So the answer is A, that is predominantly, maybe completely female. Okay, because इसमें complete female characters आ जाते हैं unless it is incomplete insensitization. Okay, so incomplete insensitivity में थोड़े बहुत male characters भी होते हैं, थोड़ा virilization दिखता है. Which of the following statements is true as regards androgen insensitivity syndrome? So there are a lot of questions in androgen insensitivity and you have to answer. There are more than one answers here. Tell me. Okay, guys, come on, be quick. Okay, one person has answered B. Now, androgen insensitivity does not occur in males. In females, it is a male. So, answer B is wrong. Okay. Anybody else? More than one answers.
कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इतना टाइम लगाओगे तो हम सारे क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएंगे. वी हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस टुडे. सी एंड डी स्वराज. Okay, so you are partially right. It is a karyotype XY, but why pubic hair? Pubic hair cannot come because adrenal gland, ये जो androgen है, it is insensitive. So you have to be very careful. Testicular feminization, they have good breasts because estrogen is acting. Testosterone is getting converted into estrogen, but testosterone जो androgen में convert हो रहा है, that androgen is not able to act. So there is no pubic hair. There is absent vagina because the external genitalia looks like a female, but Mullerian duct तो develop हुई नहीं. So these patients will later on need a vaginoplasty. Absent vagina, karyotype XY, and the breast development is normal. So it is A, C, and E. Okay, breast development क्यों भूल जाते हो? Androgen insensitivity में breasts are very much like females and they are good, well developed. Okay. Next, Mithun Balaji, you said C and E. Yes. Okay. So you missed A. Regarding androgen insensitivity syndrome, which statement is or are true? PGI का question है, so obviously more than one choices. Come on. Which of the statements are true? It is the same questions repeating again and again, जिससे कि आपका end तक आते आते by the time we finish this MCQ session, you will be good with androgen insensitivity syndrome. You'll understand it. Come on, guys. You have to be very careful. The questions are quite tricky. They might just confuse you like anything. Okay, I'm waiting for the answers. So जीनोटाइप 46XX तो नहीं होगा, हमको पता है कि ये फीमेल होते हैं. स्कैंटी प्यूबिक हेयर, येस, बिकॉज दे हैव एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी. इट कैन बी पार्शियल, इट कैन बी कंप्लीट. तो स्कैंटी हेयर आ सकता है या फिर बिल्कुल भी हेयर नहीं होगा. वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल जेनिटेरिया नहीं होगा बिकॉज ऑल्दो दे लुक लाइक अ फीमेल बट उनका वेजाना डेवलप्ड नहीं है. इट्स एन एब्सेंट वेजाना. तो वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल जेनिटेरिया नहीं है. वेजाना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेरिया. बिकॉज वेजाना इज एब्सेंट तो एक्सटर्नल जेनिटेरिया वेल डेवलप्ड नहीं है. यूट्रस एब्सेंट, yes, because they are males. Breast development is adequate because testosterone is getting converted into estrogen, which is acting on the breast tissue. Okay? So you did not answer this. All are seen in testicular feminization syndrome except same disease again, same syndrome. Tell me. Mithun Balaji, you said B and D. That's fine. E also. Now I don't know which question you are answering. Let me have this answer now. Okay, so it's B, D, and E. It is except. No, you're not answering this one, are you? Yes, it answered this one. All are seen in TFS except 46XY होता है. प्राइमरी एमिनोरिया होता है. शॉर्ट स्टेचर, विजाइना मे बी प्रेजेंट. अब इसमें कौन से आंसर्स आएंगे? टेल मी. यस, प्राइमरी एमिनोरिया तो होगा, तो दैट्स रॉन्ग नियामत. दे आर आस्किंग एक्सेप्ट, क्या चीज़ नहीं होती है. ओके, दे एक्सक्लूडिंग इट. तो क्या चीज़ नहीं है? एक तो शॉर्ट स्टेचर नहीं होगा, ये हमने कल पढ़ा था. शॉर्ट स्टेचर की जरूरत नहीं है इसमें. शॉर्ट स्टेचर इज ओनली इन टर्नर सिंड्रोम. ठीक है. एंड डी, दैट इज विजाइना मे बी प्रेजेंट. नाउ विजाइना मे बी प्रेजेंट एक्सेप्ट बिकॉज विजाइना, इसमें क्या होता है कि विजाइना का ओनली लोअर 1/3 बनता है. तो व्हाट वी कैन से इज विजाइना मे बी प्रेजेंट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से. विजाइना नहीं होता है इनमें. तो शॉर्ट स्टेचर नहीं होता है, विजाइना मे बी प्रेजेंट. विजाइना इज ऑलवेज एब्सेंट. ठीक है. Then a girl presents with primary amenorrhea, grade 4 thalarche, grade 2 pubarche and no axillary hair. So basically जो उसका androgen जो characters है, secondary sexual characteristics के वो नहीं है, but she has a good breast development, grade 5. Okay, and axilla तो बिल्कुल भी नहीं है. Pubarche is very very infantile. So what is the likely diagnosis? We know this answer. We know this answer. It's very very easy. Okay, so it is TFS, testicular feminization. So yes, salvation shift, very good. Okay, all of the following statements about androgen insensitivity syndrome are true except, again except, what is not true?
Okay, tell me the answer. Swaraj, you're writing, you're not answering this one, are you? You're not answering. Bithun, yes, pubic hair are abundant. That is the true answer. Now, here, short vagina may be present is right because they have a lower one-third of the vagina developing from the urogenital sinus. So, since it is short, you can accept it. But vagina may be developed? No. Okay. 16-year-old female presents with primary amenorrhea with bilateral inguinal hernia. She has normal sexual development with no pubic hair. So she looks like a female. Normal sexual development characteristics are there, but pubarche is not there. USG shows no uterus, no ovaries, a blind vagina. What is the diagnosis? And you will get confused now between Mullerian syndrome and androgen insensitivity. Tell me. Or even Turner's syndrome. What will it be? Mithun Balaji. No, it is not B. Why? Because there is no pubic hair. Mullerian agenesis, they will have good androgen also. There is no problem with the androgenic character. So they look absolutely normal. Mullerian agenesis में pubic hair क्यों नहीं होगा when she has good breast development, good sexual development? So the answer is androgen insensitivity. That is the difference between Mullerian agenesis and Turner's androgen insensitivity. यूट्रस दोनों में एब्सेंट होगा, दोनों में वेजाइना भी एब्सेंट होगा, प्राइमरी एमिनोरिया होगा, बट प्यूबिक हेयर क्यों नहीं होगा अगर ब्रेस्ट डेवलप हो गए तो. ठीक है. नेक्स्ट, अ यंग फीमेल presented to you with primary amenorrhea. Examination reveals normal breast development and absent axillary hairs. Okay, pelvic examination shows a normally developed vagina with clitoromegaly. Now that is slightly different from what we have been studying अभी तक. तो इसमें clitoromegaly आ गया और इसमें normally developed vagina भी आ गया. ठीक है. With clitoromegaly, on ultrasound gonads are visible in the inguinal canal, in the inguinal region. Now, what is the most likely diagnosis? She has primary amenorrhea, good breast development, but absent axillary hair. Okay, ये हमने कल पढ़ा था. It is a variation of which syndrome? It is a variation of which syndrome? Tell me. कल वाली स्पेशल क्लास अगर आपने मिस कर दी है शाम की, आई थिंक 6 बजे की या 7:30 बजे की, हमने इन दोनों क्लासेस में कंबाइन करके पूरा प्यूबर्टी एंड ऑल द सिंड्रोम्स पढ़े थे. अभिनीत, यू आर आंसरिंग ए. एनीबडी एल्स? मिथुन अगेन ए. सी. ओके, आई एम स्टिल नॉट गेटिंग द राइट आंसर गाइज. ओके, आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं सुना है. इट इज पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी. इन पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सम एंड्रोजन इज स्टिल एक्टिंग ऑन द बॉडी. कंप्लीट में एंड्रोजन बिल्कुल एक्ट नहीं करेगा, तो जो बाहर वाले जेनिटेलिया है वो पूरी तरह से फीमेल बन जाएगा. इसमें क्लाइटोरोमेगैली हो रही है, मीन्स देयर इज सम एंड्रोजन इफेक्ट कमिंग ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो इसमें क्लाइटोरोमेगैली इज द हिंट दैट शी इज प्रोबेबली हैविंग पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, जिसकी वजह से कुछ एंड्रोजेनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है. So it is B. Nobody answered B. All right. No, it is not Mayer-Rokitansky. No, not at all. Now, among the following, which is a feature of testicular feminization syndrome? Among the following, which is a feature of testicular feminization syndrome? Again, the same syndrome carrying on. PGI का question है. Generally, there are more than one answers in this. बट जरूरी नहीं कि हर बार एक से ज्यादा आंसर हो. टेल मी बच्चों, टेल मी. एक्सक्लूजन करो. ओके, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन. ओके, देन दिस शुड बी द मोस्ट प्रोबेबल आंसर. दैट इज हाउ यू सेलेक्ट योर आंसर्स. दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग एंड आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हमको पता चलता है. Very good Siddharth, it is high testosterone level because XX तो हो ही नहीं सकता, it is XY. Reared as male, no, they are always brought up as females. Well formed female, internal genitalia तो नहीं होगा, external फिर भी हो सकता है, but then that is again catchy, vagina है कि नहीं है. High testosterone because the androgen insensitivity की वजह से जो negative feedback जाना चाहिए वो नहीं जाता है, तो high testosterone levels. ठीक है. No, it is not B. They are not reared as males. They are actually females. Nobody can actually make out that they are a male because उनके सारे characteristics female वाले होते हैं. ठीक है. In
Testicular feminization syndrome, gonadectomy is indicated when. Why and when do you remove? Why तो इसमें पूछा नहीं है, but when do you remove the gonads? Okay, guys, answer. As soon as it is diagnosed at puberty, only when malignancy develops in it, when hirsutism is evident. What is the answer? Okay, anybody else? Siddharth is A, D, A, B. D, A, B. So whoever answered B is right at puberty. Why at puberty? Because whatever hormone the testis is secreting, you have to get that person to puberty. Let the hormone act, let the pubertal characteristics develop. Because testosterone से भी तो estrogen आ रहा है ना. अगर उसको फीमेल में भी डेवलप होना है तो वो estrogen तो वहीं से आ रहा है, ओवरी तो है नहीं उसके पास. तो let the testosterone come from the testes, let it get converted into estrogen, let her get all the sexual characteristics developed, and then you remove the gonads. Now अगर उसमें ऑलरेडी 2 साल 3 साल की बच्ची में डायग्नोज हो गया कि इट इज पेनफुल इंग्वाइनल हर्निया एंड शी हैज अ चांस ऑफ मैलिग्नेंसी और शी हैज सम अदर प्रॉब्लम्स, देन यू हैव टू रिमूव इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम एज सून एज इट इज डायग्नोज्ड. अदरवाइज लेट हर गो टिल प्यूबर्टी एंड देन यू डू दैट. ठीक है. देन a 16-year-old female presents with primary amenorrhea. Examination shows a short blind vagina, okay, with absent uterus. Now we don't know whether it's a male or a female, so what will you do now? There is a short blind vagina, that means only the lower 1/3, and absent uterus, primary amenorrhea, and they're saying it's a female. The next investigation of choice. Female means she's looking like a female, okay? So what will be the next investigation of choice? Come on, be quick so that we can finish the MCQ session today. फिर हम शाम को स्पेशल क्लास में आज एक स्पेशल क्लास है मेरी 7:30 बजे. ठीक है. तो वी विल डिस्कस द अदर हार्मोन्स जो हमने अभी नहीं डिस्कस करी, GnRH, gonadotropins एंड ऑल. Come on guys. Okay, yes, answer is A, that is karyotyping. You have to first decide whether ये TFS है कि Mullerian agenesis है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप देखो XX है कि XY है. True about Klinefelter syndrome. Now we know what is Klinefelter syndrome. Yes, I'm not telling you what it is because वो आंसर हो जाएगा फिर. Tell me the answer. Somebody is answering C also here. No, don't do gonadotrophin levels. First you do the karyotyping. Okay. What is the answer here? True about Klinefelters. So it may be more than one answers here because it's a PGI question. Come on. Okay, Swaraj and Siddharth, yes, it is A. Niyamat, it is A. और भी तो आंसर्स हैं. Yes, 47XXY, that's fine. Or it's not just one answer, there are more answers. Everybody is answering A. No idea कि और क्या होने वाला है इसमें. A तो है ही. चलो और क्या होगा. They are not well developed because उनका testes properly developed नहीं है. So it is high FSH and male hypogonadism. Yes, Mithun, it is A. You said D, right? A and D. No, it is not D. It is not a female, it's a male. So high FSH, male hypogonadism, and XXY. High FSH because testes ठीक से काम नहीं कर रही, testosterone ठीक से secrete नहीं हो रहा, तो उनके gonads भी ठीक से develop नहीं है, underdeveloped male है, and high FSH है. ठीक है. Then a patient of 47XXY, that's again Klinefelter's, presents with features of hypogonadism. Likely diagnosis. I've given you the answer. I have given you the answer. It is Klinefelter's. Okay. So that was very obvious. Next. True about Klinefelter syndrome. Okay, PGI का question है. There will be more than one answers which are correct. Tell me. Salvation, it is C. Yes, C is right. एक आंसर और होना चाहिए.
Okay, anyone else? A and C, that is right, Phoenix. A, legs are longer, more in length than the trunk. Maybe because of this extra Y chromosome, they are taller, and the legs and arms are longer than the trunk. Okay, so they look slightly abnormal. I, intrauterine fertilization cannot be successful. No, it can be successful. Sometimes they have some sperms inside the epididymis, so that can be extracted. FSH, LH are not decreased; they are increased. Okay. Now, young male presents with delayed puberty, with decreased FSH, LH and testosterone. Which of the following is not possible? Not possible पूछ रहे हैं, ठीक है? So what is happening? सब कुछ decrease है. Testosterone भी decreased है, FSH, LH भी decreased है. So what kind of infertility या puberty, delayed puberty it is? Hypogonadotrophic hypogonadism, hypergonadotrophic hypogonadism? Tell me. Which is not possible? Just one answer. Yes, Klinefelters is not possible. Very good, Niyamat. Because Klinefelters में ये हाई होता है FSH-LH, ठीक है. कॉलमैन्स में JNRH डेफिशिएंसी होती है न्यूरॉन्स की, तो पूरा ही शटडाउन होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल डिले कैन हैपन. यस. Now, in which of the following conditions do the ovaries function normally? Which of the following conditions do the ovaries function normally? Be quick guys. थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलो तो फिर हम आगे चलें. Yes, you're right. Mithun, it is Rokitansky, Kuster-Hauser syndrome, and I think Swaraj आपने भी इसी का आंसर दिया या फिर पिछले वाले का था उसमें भी B था. Okay, which of the following statement is true about Swire syndrome? So what is a Swire syndrome? कल हमने पढ़ा था. Swire syndrome is very much like Turner's, but इसका karyotype अलग होता है. Okay. Swire syndrome, which is true? Wilson, did you answer this? And actually answered it right. Okay. Okay, Swire syndrome में basically they are 46XY. Actually, they are normal males karyotypically, but the gonads are dysgenetic. They don't work. So there is no AMH. So the uterus develops, the vagina develops. Ovary does not develop क्योंकि XY है. तो इनको ovum donation चाहिए होगा because they have a uterus and they can have a pregnancy by getting ovum from somewhere else because uterus है इनके अंदर, ठीक है? And they will present with primary infertility. That is also true, right? So it is a kind of Turner syndrome. Now, a mother brings her 19-year-old daughter to your clinic with complaints that she has not started having menses yet. तो हमने पढ़ा था कि delayed puberty up till 16 years you can wait. अभी menses नहीं आया at the age of 19. General examination reveals normally breast developed and even the normal pubic hair. On pelvic examination, vaginal end is blind, uterus is not palpable. You don't normally do a pelvic examination in a 19-year-old, but they have said in the question that vagina is blind, uterus is not palpable. So आपका सबसे पहला diagnosis क्या रहेगा? Okay, tell me the answer here. No, how can it be Asherman? No, not at all. Mithun, can I get your answer? Niyamat, it's A. Yes, it is A. Because it is Mullerian agenesis most likely. She has never had a period, so it is Mullerian agenesis. Uterus is absent. Very, very clear-cut question. Salvation, you are saying C. No, how can you say C unless you do a karyotyping and everything? True regarding TFS. Again, TFS, testicular feminization syndrome. Phenotype that of a female. Phenotype and genotype that of a male. Genotype, phenotype and gonads of a male. या फिर gonad and genotype that of a female. Confusing, right? But actually very simple answer.
Yes, Dr. Ashish, it is phenotype that of a female. Now, these are male hermaphrodites. They cannot have phenotype and genotype same. So, genotypically they are males, phenotypically they are females. So, that is why they are male hermaphrodites. Okay. Which of the following is or are true regarding the androgen insensitivity syndrome? Absent vagina, karyotype XX, karyotype XY, pubic hair normal, breast development adequate. Tell me. It is not one answer. There are many other answers. Okay, Wilson, you're saying A, Ashish, Dr. Ashish, A, but what else? Don't just write A, write all the options. Okay, so Wilson, you've written A, and then you read, okay, Mithun, you said A, C, and E, and that is the right answer. That is how I wanted the answer, so that you write it in one block. It is breast development good, absent vagina, and there is karyotype which is XY. Okay, karyotype is not XX, and pubic hair is not normal. Okay, now, true about precocious puberty in girls. Dr. Ashish, you are saying CBB. What does that mean? It's ACNE. Okay. Wilson, no, it is not D. Now, true about precocious puberty. Tell me. Secondary sexual characteristics before 8 years, increase in testis size, earliest sign of puberty in boys. They are asking about girls, so that may be a different wrong option. Commonest causes idiopathic, hypothalamic hamartoma is least of the central causes. MRI brain is a mandatory investigation. Okay, A, D, and E. According to Niyamat, according to Salvation, it is again A, D, E, and E. See, A is right because secondary sexual character is developing before 8 is precocious. Commonly, it is idiopathic. I told you yesterday in the class, commonly in females, the central precocious puberty is very, very common in females, and that is generally idiopathic. We don't know the cause. MRI brain is a mandatory investigation. Yes, I would say yes, because you have to check that there is no hamartoma, there is no tumor, there is no injury, there is no infection. So you need to do an MRI. So these three, I would say A, C, and E. Mithun, yes, it is A, C, and E. Least common cause of ambiguous genitalia in females. Okay. So ambiguous genitalia is because of the adrenal hyperplasia. What are the enzymes? The most common ones and the least ones. So they are asking the least common one. Okay. Okay, let me have the answer, guys. It's just one option, not multiple. Niyamat. No, that is not the answer. 17 alpha hydroxylase नहीं है. In fact, it is not in one of the deficiencies. Deficiencies जो दो होती है, एक most common, एक least common, वो आपको बताना है. इसमें least वाला पूछा, तो 17 alpha hydroxylase is actually a path of the chemical reaction. तो इसको तो हम measure करते हैं. It is not the enzyme. Okay, anybody else? The least common is 3 beta dehydrogenase, which is again when you check the pathway of the formation of mineralocorticoids, corticosteroids and the androgen, तो बीच में 21 hydroxylase and 3 beta steroid dehydrogenase आता है, और दोनों ही तीनों pathways में इन दोनों enzymes की जरूरत पड़ती है. Most common cause is 21 hydroxylase deficiency. The other less common is 3 beta steroid dehydrogenase. तो ये दोनों enzymes formation में काम आते हैं. ठीक है. Next, ovarian cycle is initiated by. Ovarian cycle को कौन initiate करता है? Is it LH? Is it FSH? Is it estrogen or GRH? Tell me.
ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय विच हार्मोन? नाउ यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल में सारे हार्मोन्स का रोल होता है, बट इनिशिएट कौन करेगा? विल्सन, यू सेड सी. Is it this answer? Is it this question you're answering? Okay, anybody else? Okay, B. Yes, Mithun, it is B. It is the FSH which will start initially growing and coming out and getting secreted from the ovary, from the pituitary because of the GnRH pulses जो थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसीज में पल्सेस आएंगी. FSH कंटिन्यूसली सिक्रीट होगा, देन इट विल कॉज ग्राफिन फॉलिकल डेवलपमेंट एंड ओवेरियन डेवलपमेंट, एंड बाद में ये LH और प्रोजेस्टेरोन आएंगे. ठीक है. जस्ट बिफोर ओवुलेशन देयर इज LH सर्ज, FSH सर्ज, LH FSH बोथ और नन. दैट्स अगेन अ कंफ्यूजिंग आंसर, बिकॉज हम जब ओवुलेशन पढ़ते हैं तो हमको जो पढ़ाया जाता है हमको वही दिमाग में रहता है, बट वी फॉरगेट द अदर थिंग्स. सो दैट्स अ हिंट गाइज. Okay, A, B, what else? What else? Remember the graph that we see. Okay. So actually it should be LH surge, but in your books it is written LH and FSH surge, because क्या होता है कि पहले FSH का सर्ज आता है, उसके बाद ईस्ट्रोजन का पीक आता है, ईस्ट्रोजन कॉजेज LH पीक. तो इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था LH एंड ईस्ट्रोजन सर्ज, बट इसमें किताब में कहते हैं कि भाई FSH का भी सर्ज होगा तभी तो ईस्ट्रोजन राइज होगा, तभी LH राइज होगा. बट अगर जस्ट बिफोर ओवुलेशन पूछेंगे, आई वुड गो विद दिस आंसर, दैट इज ए. आई एम डिसएग्रीइंग विद द टेक्स्ट बुक जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है. इट शुड बी एक्चुअली LH, या तो LH एंड ईस्ट्रोजन दोनों होता या सिंपल LH. ओके. LH एंड FSH दोनों इसमें लिखे हुए हैं. आपने विल्सन, डॉक्टर आशीष, आपने C को आंसर किया है, बट आई थिंक आई डिफर माई आंसर, बट देन इट डिपेंड्स हाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ठीक है. ग्रैनुलोसा सेल्स प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. विच एंजाइम? ग्रैनुलोसा सेल्स दे प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? कौन सा एंजाइम चाहिए होता है ईस्ट्रोजन बनाने के लिए? Salvation, alkaline. What kind of screen do you want, Salvation? Why black and white screen, ma'am? What kind of screen do you want? Do you want a black screen? I think that is the format of the slides that we use in Unacademy, so it is always black and white with the blue strips. Okay, aromatase. Yes, Mithun, you're right. Sarjuna, you're right. It is aromatase. Yes, right. So that's aromatase enzyme, which is required for the conversion of for the production of estrogens. Now, following are related to the granulosa cells except कौन सी चीज गलत है ग्रैनुलोसा सेल्स को लेकर? Okay. Yes, it is B, because they have a steroidogenic function. They are producing estrogen and inhibin even in the first half of the cycle. And blood supply का आंसर ये है. जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि the granulosa cell layer become vascularized only after ovulation with the formation of corpus luteum. Otherwise they do not have their own blood supply. Okay. And granulosa cells produce activin, inhibin, ये सही है. Estrogen stimulates proliferation, ये भी सही है. ठीक है. Alright, all of the following statements are correct except कौन सा statement सही नहीं है इसमें? LH surge is initiated due to sustained levels of 200 picograms of estrogen. LH surge is maintained by estrogen progesterone both. Meiosis 1 is hormone dependent. Meiosis 2 is hormone dependent. कौन सा वाला गलत है? You remember meiosis 1 and meiosis 2? तो इसमें कौन सा वाली hormone dependent है, कौन सी वाली नहीं है? That ways you will select your answer. Tell me. Meiosis 1 is hormone dependent. Do you think that is wrong, Mithun? Do you think that is wrong? LH surge is maintained by estrogen and progesterone. That is a very confusing thing. But then yes, if you read the menstrual cycle properly and see the graph, I will
teach you menstrual cycle tomorrow evening in the special class. We will discuss the hormonal fluctuations. These are some things that we miss. We know that LH surge comes because of estrogen, but there is some role of the progesterone as well. So what is the answer here? It is meiosis 2 is hormone dependent. We know meiosis 2 is not hormone dependent because it happens as soon as the fertilization happens. So meiosis 2 जो secondary oocyte सेकेंड पोलर बॉडी देकर सेकेंड मियोसिस को कंप्लीट करेगा, दैट हैज नथिंग टू डू विद द हॉर्मोन्स. इट इज बेसिकली द स्पर्म फर्टिलाइजिंग द ओवम. ओके, सो इट इज नॉट हार्मोन डिपेंडेंट. सो दैट्स रॉन्ग आंसर. नाउ मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस अकर्स ऑन विच डे? ये हमको पता होना चाहिए बिकॉज हम लोग सारे जितना भी इवेल्युएशन करते हैं प्रोजेस्टेरोन का, वी डू अ ब्लड टेस्ट ऑन द पेशेंट टू चेक वेदर इट इज इन द लूटेल फेज, प्रॉपर लूटेल फेज और नॉट. तो कौन से डे करते हैं? No, that's wrong, Wilson. It is not 16th day. No. Yes, it is 22nd. नियामत, yes. 22nd day पे सबसे ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होता है, सबसे ज़्यादा सिक्रीटरी चेंजेस होते हैं. इम्प्लांटेशन विंडो स्टार्ट्स फ्रॉम 21 to 24 days. That is the time when progesterone is maximum. Corpus luteum is maximally secreting progesterone. उसके बाद 24 days के बाद ये सब डिजेनरेट होना शुरू होता है. So it is 22 days. ठीक है, 22nd day. All are true regarding folliculogenesis and ovulation except what is not true? Tell me. Chronic elevation of androgens is detrimental to the follicles. AMH supports monofollicular development. First phase of follicular growth is gonadotropin insensitive. Elevated and static levels of estradiol is essential for ovulation. So what is not true? Phoenix, did you answer for this particular question or the other one? Salvation Shiv, we are saying C. Wilson D. Anybody else? Okay, the answer is D. Because we do not want static levels. There is always a fluctuation of the hormones. The hormones have to be fluctuating like this. It can't be a static level like this. Any static level will give rise to improper ovulation and there will be some arrest of the follicle. Okay, it will be like a polycystic ovarian disease. Okay, so that is wrong. Now, the following are related to the corpus luteum except what is not related to corpus luteum? Luteinized granulosa cells produce progesterone, so we are excluding the thing. Estrogen continues to be produced by the luteinized lead theca cells. Luteolysis is due to estrogen, PGF2 alpha and ethylene. Peak steroid production is between 23rd to 25th day. Okay, so what is the answer, guys? Tell me so that we can finish. We can finish quickly. Anybody? You don't know? You don't know the answer? I just told you कि maximum production of progesterone कब होता है, maximum steroid production कब होता है. So that is a hint. Okay, so it is right. D, that is Wilson, you are right. Sarjuna, you are right. Peak steroid production is at 22 weeks. उसके बाद ये कम होना शुरू होता है. 23 weeks से तो ये खत्म होना शुरू हो जाता है. तो it cannot be a peak production at 23-25. ठीक है. Earliest morphological evidence of ovulation on endometrial biopsy. Tell me. Endometrial biopsy में just ovulation हुआ है, आपको क्या दिखेगा? What will you see? Earliest morphological evidence of ovulation on endometrial biopsy is no. What can you see in endometrial biopsy? Can you see glycogen? No, you can't see glycogen in endometrial biopsy. It is basal vacuolation, बच्चों. Yes, you are right, Mithun. You are right, Abhineet Verma. Basal vacuolation happens just before ovulation. That is, the nucleus is pushed on one side because of the accumulation of glycogen. So biopsy में glycogen नहीं दिखेगा, vacuolation दिखेगा. ठीक है, that is a pathological finding. Now, all of the following statements are correct except menstrual blood is arterial, prostaglandin released at the time of menstruation is PGE2, zona basalis regenerates the
Endometrium and anovulatory cycles are painless. What is not correct? Come on guys. मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम पढ़ेंगे स्पेशल क्लास में. ओके D is wrong, Phoenix. Anovulatory cycles are painless actually. That is why you give OCPs. 21 days की pills देते हैं पेशेंट्स को डिसमेनोरिया कम करने के लिए, बिकॉज वो साइकिल को एनोवुलेटरी कर देती है. इट बिकम्स रेगुलर एंड लेस पेनफुल. ओके एनीथिंग, एनीबडी एल्स? Just a few more minutes and then we finish, and then we can continue in the evening special class. Okay. Okay, so nobody is answering. The answer is prostaglandin released at the time of menstruation is PGE2, which is wrong. It is actually PGF2 alpha. PGF2 alpha is the main prostaglandin which causes contractions and spasms, and that is the main prostaglandin released during menstruation. Okay. Yes, Arjuna, you're right. Slightly late, beta. You have to be quick. All of the following are produced by ovary except. All of the following are produced by ovary except what? We measure this hormone, a hint I am giving you, in polycystic ovarian syndrome. We measure this hormone just to check what? Okay, anybody? No, it is not androstenedione. What is not produced by ovary? They are asking. Something which is not produced by ovary. Ovary produces so many hormones. So it is actually DHEAS, which is exclusively produced by the adrenals, and we check this in PCOS patients just to rule out that there is no adrenal cause, because they are hyperandrogenic. We don't know where this androgen is coming from, because all the other androgens, testosterone, androstenedione, 17-hydroxyprogesterone, are produced by the ovary. The theca cells and the granulosa cells, उनके बीच में टसल चलता रहता है, शटल चलती रहती है. But DHEAS is exclusive for adrenals. Okay, so that is how we rule out that it is no adrenal cause in PCO. Then luteal phase defect is due to what? Why does the LPD occurs? Uterine scarring, chromosomal abnormality, abnormal release of GnRH, या फिर absence of oocytes in the ovary. Very simple question. You just have to use your common sense. Okay guys, let me have the answer. So uterine scarring, no, not at all. LPD is what? Luteal phase defect means there is some problem with the endometrium. It is the endometrial biopsy which is telling you there is luteal phase defect, or you do a blood test on day 22 and check what is the progesterone level. So उस समय progesterone का जो level होना चाहिए highest वो कम है, या फिर endometrial biopsy में secretory changes नहीं दिख रहे हैं. So ये सब deficiencies क्यों हो रही हैं? Why? It's a hormonal thing. Okay. Now answer. Uterine scarring will not give rise to LPD. That has nothing to do with luteal phase. It is a hormonal cause बच्चों. तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? It is a hormonal cause. Okay. So 11E you are saying Phoenix, but 11 तो हम खत्म कर चुके हैं. Yes. And now, okay, it is release, abnormal release of GnRH. Yes, because anything to do with hormones, it has to be a hormonal thing. Okay, GnRH ठीक से release नहीं हुआ, LH के में problem आ गई, corpus luteum ठीक से नहीं बना, there was some problem. It has nothing to do with absence of oocytes या फिर uterine scarring. Uterine scarring can lead to endometrial implantation will not be proper. The secretory changes will happen, but because of scarring, there may be some fibrosis that can lead to implantation failure. But it is abnormal release of GnRH which can cause LPD.
Okay. On examination of endometrial tissues obtained from a biopsy reveals simple columnar epithelium with no subnuclear vacuole. So there is no subnuclear vacuole. That means ovulation. Okay. The stroma is edematous. Tortuous gland contains secretions. So subnuclear vacuole is a फाइंडिंग फॉर ओवुलेशन. अभी हमने डिस्कस किया. नाउ अब क्या दिख रहा है? स्ट्रोमा इडीमेटस दिख रहा है. टॉर्चुअस ग्लैंड्स दिख रहे हैं कंटेनिंग सिक्रीशंस. दस द फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट विद विच स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? नॉन ओवुलेटरी साइकिल, मिड सिक्रीटरी, अर्ली सिक्रीटरी या फिर लेट प्रोलिफरेटिव? टेल मी. कब ग्लैंड्स टॉर्चुअस हो जाते हैं? स्ट्रोमा इडीमेटस हो जाता है. इतना सारा सिक्रीशन कब आ जाता है? ओके. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द आंसर? Sarjuna, it is C. Okay. I would not agree with C. Why? Because they have clearly mentioned there is no subnuclear vacuolation. Subnuclear vacuolation is immediately after ovulation. So subnuclear vacuolation ovulation के just बाद early secretory changes में दिखेगा. धीरे धीरे ये जो subnuclear vacuolation है ये चला जाता है. It just pushes the nucleus on one side and now the gland becomes filled with secretions. So it will be मिड सिक्रीटरी बच्चों. इट विल बी मिड सिक्रीटरी. लेट प्रोलिफरेटिव कैसे? लेट प्रोलिफरेटिव यानी कि ओवुलेशन ही नहीं हुआ. ओवुलेशन तो हो चुका है. स्ट्रोमा इडीमेटस हो गया. इट इज फुल ऑफ सिक्रीशन. सो इट इज मिड सिक्रीटरी. मिड सिक्रीटरी में जब आप देखेंगे आपके डीसी दत्ता में बहुत सुंदर डायग्राम बना है. आई एम गोइंग टू यूज दैट डायग्राम टुमारो इन माई क्लास. यू कैन इजिली सी द सूडो स्ट्रैटिफिकेशन. यू कैन इजिली सी द सॉ टूथ अपीयरेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड यू कैन इजिली सी द सबन्यूक्लियर वैक्यूलेशन. ओके. सो इट इज मिड सिक्रीटरी. No, it is not D, it was B. Okay. Pulsatile GnRH is used for managing what? Pulsatile GnRH जब हम देते हैं और continuous GnRH देते हैं तो दोनों में क्या फर्क है? Pulsatile GnRH का क्या फायदा है? Understand the concept, what they are trying to say. So it is pulsatile, it is not continuous. So you can't just think of जो हमेशा आप सोचते हो. It is something different. See, I'm giving you the hint, तो भी आप लोग वही लिख रहे हो. A, B, D. Yes, I got one right answer. Sarjuna, very good. That is anovulatory infertility because pulsatile GnRH is what is happening in the body, right? Pulsatile GnRH means you are giving something which normally should happen within the body. तो pulsatile दे रहे हैं तो इसका मतलब या तो आप anovulatory infertility को ट्रीट कर रहे हैं, उसको ovulation नहीं हो रहा है, तो you are just shutting down the internal cycle and you are giving her pulsatile GnRH जिससे properly FSH और LH की pulses निकले जो normal होता है, या फिर you are treating delayed puberty. डिलेड प्यूबर्टी में भी आपको जीएनआरएच देकर उसकी प्यूबर्टी को एनहांस करना होगा. साथ में ईस्ट्रोजन भी देते हैं, बट जीएनआरएच को पल्सेटाइल वे में देने से आप शट डाउन नहीं कर रहे, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो. बाकी सब तो शट डाउन करने वाले हैं. प्रीकोशियस प्यूबर्टी को शट डाउन करना है तो कंटिन्यूस जीएनआरएच देना है. फाइब्रॉइड को कम करना है, कंटिन्यूस जीएनआरएच देना है. डीयूबी को शट डाउन करना है, कंटिन्यूस देना है. तो पल्सेटाइल इज ओनली फॉर द नॉर्मल साइकिल विच शुड हैपन इनसाइड. ठीक है. ओके. Now 15 following are seen in Colman syndrome. What is Colman syndrome? Colman's में GnRH के जो न्यूरॉन्स हैं वो आर्कुएट न्यूक्लियस से मीडियन एमिनेंस में नहीं आते. फेलियर टू माइग्रेट होता तो GnRH डेफिशिएंसी होती है. सो व्हाट इज सीन एक्सेप्ट? व्हाट ऑल इज देयर एक्सेप्ट? टेल मी. Hemant Kumar, I'm trying to talk both in Hindi and English, but because I've chosen Hinglish as a language, so I'm trying to explain in Hindi as well. So you can catch whatever I'm talking in English and you can omit the Hindi part. Okay? Yes, we're getting the right answer. So it is Niyamat is saying B and that is right. It is not night blindness, it is color blindness. Okay? So that's the right answer. Okay, I can't see my cursor. Where is my cursor? This cursor goes. Yeah, that's night blindness. Now, all of the following changes are seen in puberty except all of the following changes are seen in puberty except what? Puberty के समय क्या चीज नहीं होती है? This is the last question, guys, because now I'm going to finish and I'm going to restart this class in the evening on Unacademy on the special class at 7:30 p.m. So you have to use my code dr.soanl, dr.soanl in capitals without any gap. Use that code, enter the Unacademy Learners app, and then you can click on my class and listen to that. Okay, so we'll be discussing all the major hormones.
This will be part 1 today, part 2 will be tomorrow, and we will continue with these MCQs. Okay? No, it is just one answer here. So the answer is neuropeptide Y, and we will probably discuss this in the evening. I have already discussed puberty and the role of leptin. We know that the fatty ladies, the fatty girls, they have the role of this leptin getting secreted from the fat, and that can lead to precocious puberty. That is basically a cause of onset of puberty. GABA and glutamate, you just have to remember this, that GABA has to decrease, glutamate has to increase. The only wrong thing is neuropeptide Y. It should not increase, because अगर ये increase कर गया, if it increases, it will suppress GnRH. We don't want the suppression of GnRH. We want stimulation of GnRH. तो आज evening की class में we will be discussing what are the different factors that secrete and which inhibit GnRH. Okay, guys. So all the best for your exams. Tata, bye bye, take care. We will see you in the evening at 7:30 p.m. on my special class on the Unacademy Learners app. Okay, bye bye.